Hi, welcome back. We had been studying the first lesson, that is the last lesson. Circumstance आपको पता है. Germany captured two French provinces, Alsace and Lorraine, and issued an order to speak and learn only German languages in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel का एक स्कूल था. M. Hamel had been teaching there for the last 40 years. ये बात किसी को पता नहीं था. उसी दिन लास्ट क्लास होने वाला था. Sudden order. That day, our boy Franz, he was late and he was in great fear. क्योंकि टीचर बोला तो था उसी दिन फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे. ABCD तो आते नहीं है. So एक second he decided to go outside and spend the day outdoors. बाहर बहुत सुंदर सा day was warm and bright. Birds were chirping at the edge of the forest. And पीछे open field में Russian soldiers drilling कर रहे, exercising कर रहे. ये सभी साइट्स क्लास की ग्रामर की रूल से ज्यादा टेम्पटेशन देने वाला था. But France, he had the power to resist his temptation. जल्दी स्कूल पे जा रहे, जाने के टाइम में रास्ते में एक नोटिस बोर्ड था टाउन हॉल पे. So many people were there, and finally France reached the school. लेकिन स्कूल में आते ही normally when the school began, classes began, there was such a great message which could be heard out in the street, opening and closing your desk, lessons repeated in unison, teachers great ruler rapping on the table. लेकिन उसी दिन it was also still silent. It resembled like a Sunday morning. एक खिड़की से फ्रांस अंदर देखा, his classmates they were sitting and writing their own work. ये हर बार whenever he was late, he depended on the commotion. ये disturbance की फायदा उठा के he would get into the seat without being noticed by the teacher. That day he did not get a chance. Finally, he had to open the door before everybody. And you can imagine how he was frightened. लेकिन कुछ भी हुआ नहीं. M. Hamel बहुत प्यार से बोला, कोई बात नहीं, चलो जाके तुम्हारा सीट पे बैठो. We were beginning without you. When he sat there, after some time, when he got over his little fright, he noticed the teacher. He was in a special uniform, frilled shirt or a black silk cap, all embroidered. ये only 2 दिन ही पहनते थे inspection दिन में और prize day का दिन में. But the most important thing that France noticed was the presence of village elders at the back of the class. Old Hauser, former mayor, former postmaster, and I suppose सारे village elders. While he was wondering all about this, M. Hamel अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया and in the same grave manner, serious manner, बच्चों से बताया, बच्चों आज मेरी तरफ से लास्ट क्लास है. Order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. आपका नया टीचर कल आने वाला है. इसलिए आज इस लास्ट क्लास में I want you to be very attentive. फ्रांस बोल रहे यार, ये बात मेरे लिए थंडर क्लैप था. ओह, मेरा लास्ट क्लास. अरे ये क्लास में तो होने की फायदा भी बताया, डिसएडवांटेजेस भी बताया. One, he could not learn anymore. He could not seek birds' eggs. Number 3, he could not go sliding down the shaft. Faida, the idea that M. Hamel, the harsh discipline teacher, was going away. He could forget his ruler and he could forget the cranky nature of the teacher. उसके बाद ये सभी बातें के बारे में सोच रहा था. France noticed the teacher stood up and called his name. इनका नाम आ गया. To answer the question. What will happen if he was not able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loudly, clearly, without one mistake. Zarur teacher, maar rahega. But he got confused in the first words.
shivering, his heart beating up, held his desk. लेकिन कुछ भी हुआ नहीं. टीचर बोल रहे, I won't scold you, little friends. लेकिन तुम देखो how it is. तुम देखो what is the situation now, where we have come out. हम कहां पे आ चुके हैं. Every day we have said to ourselves, हर दिन हम बोलते हैं, अरे I have plenty of time, I will learn it tomorrow. कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा. बोल बोल के पढ़ाई तो छोड़ दिया. And now those fellows out, बाकर की वो लोग जर्मन्स, वो आपसे बोलेंगे आपको क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है. बिल्कुल आपका राइट्स पूरा छीन लिया. लेकिन गलती से तो तुम्हारा नहीं है. We all have a great deal to blame ourselves with. बच्चों ने गलती बताया. They kept everything for the next day. Your parents, they were not anxious enough to send you to school. Because poverty was at its height at that time. They preferred to send them to milk or farm so as to gain more money. Teacher की गलती क्या था? When the children wanted to learn their lessons, he asked them to water the plants. And when he wanted to go for fishing, he gave them holiday. Next paragraph. Then, from one thing to another, एक एक बात बोल के यम हैमेल ये भी बताया that's importance of language. Then from one thing to another, Yam Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Which is the most beautiful language in the world? According to Yam Hamel, French language, because he was a Frenchman. हम इंडियंस बोलेंगे हमारा मातृभाषा हिंदी है. So हर एक देशवासी अपना अपना भाषा बोलेंगे. The most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it. ये paragraph very important paragraph है. How did M. Hamel describe the importance of a language? सबसे पहले बताया था French language. It was the most beautiful language in the world, clearest language, logical language. इसलिए हमें अपना भाषा को गार्ड करना पड़ेगा and among us and never forget it. कभी हमारा भाषा को भूलना नहीं चाहिए. Because when a people are enslaved, when a people here means a nation, when a nation becomes slaves, so long as they hold fast to their language, जब तक वो अपना भाषा को मजबूत पकड़ेगा, as if they had the key to their prison. It is just like they had the key to their own prison. उनका prison का चाबी खुद के हाथ में होने के समान है. That means language. Through the key of language, we can break open any lock of slavery. Very important message. Language is the powerful weapon by which we can break open any boundary. So how did M. Hamel describe French language? He said that French language, it was the most beautiful language, clearest language. So they had to guard the language, because when a people are enslaved, they can open the lock of slavery by using the key of language. And then he opened a grammar and read us our lessons. उसके बाद ये भाषा की importance बोलने के बाद grammar का book निकाला and he read some grammar lessons. I was amazed to see how well I understood it. देखो आखिरी क्लास में टीचर जो कुछ पढ़ाया सब कुछ समझ में आया. अभी तक टीचर ने जो पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. Today is the last class. देखो last class में whatever the teacher taught, he could understand well. All he said seemed so easy I think. Teacher जो भी पढ़ा रहे सब कुछ easy. And that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. एक सच्चाई फ्रांस बता रहे. I had never listened the class
so patiently, इतना शांति के साथ, इतना ध्यान पूर्वक मैं पहले कभी क्लास सुना नहीं. And the teacher had never explained everything with so much patience. टीचर भी इतना पेशेंस के साथ कभी लेसन सिखाया भी नहीं. ऐसे लग रहे. And it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसे लगा टीचर जाने से पहले उनका दिमाग में क्या क्या चीज है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या नॉलेज है, ये सभी हमारे दिमाग में डालने के लिए सोच रहे हैं. They put all into our heads at one stroke. एक स्ट्रोक में उनका पूरा नॉलेज की आखिरी क्लास में एक साथ बच्चों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लगा टीचर का ये इंटेंशन देखे. टीचर वॉज वेरी बिजी. He did not waste a single second. He taught them the important aspects of language. Then grammar. उसके बाद after the grammar we had a lesson in writing. Grammar के बाद writing का lesson था. That day M. Hamill had a new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. सुन लेना. आखिरी क्लास में टीचर सभी बच्चों को गिफ्ट दे दिया. क्या था गिफ्ट? न्यू कॉपीज. ये कॉपीज का कवर पेज इट रिसेंबल्ड जस्ट लाइक द नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस, रिटन इन राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस ऐसे लिखा हुआ था. दे looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk. ऐसे लगा हमारे डेस्क के ऊपर रोड में हजारों राष्ट्रीय झंडा वहां पे लहरा. What were they? They were copies, new copies. So what were the national flags? The new copies were the national flags. क्योंकि वो कॉपीज का कवर पेज नेशनल फ्लैग की तरह थे. सो व्हाइल द चिल्ड्रन वर कैरिंग राइटिंग द नोट्स इन देयर कॉपी बुक्स, ऐसे लगा दूर से देखा तो ऐसे लगा hundreds of national flags are moving inside the classroom. You ought to have seen, आपको देखना चाहिए था, how everyone set to work. हर एक बच्चा कितना ध्यान से काम कर रहे हैं. हाउ एवरीबडी वॉज वेरी बिजी एट देयर वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. चिल्ड्रन वर डूइंग देयर वर्क. देयर वॉज नो मोर शाउटिंग, नो मोर साउंड, एंड द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. द ओनली वन साउंड दैट कुड बी हर्ड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर. Once some beetles flew. ये पढ़ाई आराम से हो रहे, उसके बीच में कुछ beetles काला वाला भौरा क्लास में आ गया. And you know, even though the teacher is teaching very sincerely, अगर एक lizard चिपकली क्लास में गिर गया तो क्या होगा? Class will be disturbed. Here black beetles, ये पढ़ाई के बीच में some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कितना ध्यान से, कितना इंटरेस्ट से बच्चा पढ़ रहे देखो. The children were doing their work. So doing their work, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the little ones who worked right on tracing their fish hook. कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर फिश हुक्स बना रहे थे, वो भी ये बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे. एज इफ दे वर फ्रेंच. क्योंकि ये बीटल्स कहाँ का है? ये तो हमारे देश के है, फ्रांस का है, ये हमें कुछ नहीं करेगी. अगर ये बीटल्स जर्मनी से आते हम तो भाग जाते. एंड ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो. उधर रूफ में पिजियंस कू कर रहे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फ्रांस थॉट टू हिमसेल्फ, will they make them sing in German? Even the pigeons. अरे ये जर्मन लोग ये पिजियन से भी बोलेंगे क्या? जर्मन भाषा में गाओ.
So that is a very humorous remark. क्या था? When slavery is imposed upon a nation, the rights and the duties of human beings, only human being, will be taken away. फिर ये जानवर से नहीं बोलो जर्मन भाषा में आवाज बनाने के लिए. Why? Only the human beings. Then, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. Sometimes writing के बीच में friends टीचर को देखा. What was the teacher doing? Gazing, looking, first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. टीचर पिछले 40 सालों से वहां पे पढ़ा रहे, फिर भी टीचर ये एक चीज को ध्यान से देख रहे, and as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. वो छोटे क्लासरूम के अंदर सब कुछ कैसे, ये सभी बात वो अपना मन में फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. Fancy, suppose for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. पिछले 40 सालों से it was his world. Garden outside, class in front. ये ऐसे एक दुनिया छोड़ के एकदम जाना तो कितना दुख भरी बात है. So for the last 40 years, it had been his world, just like that. अब पिछले 40 सालों से क्या क्या चेंज हो गया देखो. Only the desk and the benches had been once smooth. सभी बेंच डेस्क बिल्कुल स्मूथ हो गया. The walnut trees in the garden were taller. बाहर एक walnut tree था, वो थोड़ा लंबा हो गया. And a hop vine that he had planted himself. एक hop vine plant, वो खुद ने प्लान किया था. Were taller and about to the windows to the roof. ये twined about to the windows to the roof. Twine करके roof तक आ गया. How it must have broken his heart to leave it on. ये सभी बात छोड़ के जाना कितना दुख की बात है. Poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunk. Poor man, सुन रहे ऊपर कमरे में his sister had been packing the trunk. वो लोहे की बॉक्स पैक कर रहे, सभी सामान पैक कर रहे. For they must leave the country next day. क्योंकि दूसरा दिन उनको ये अल्साइज छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कल से फ्रेंच का पढ़ाई नहीं है. It was his last French class. So एक चीज देखे the harsh disciplined teacher sat there. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन आखिरी मिनट तक पढ़ाने का मन तो था. Suppose it was the last class, ऑर्डर आ गया, सुबह आके बच्चों से बोल सकते थे बच्चों देखो क्लास नहीं चलो, लेकिन ऐसे नहीं किया. He had the power to continue up to the last second. After the writing, we had a lesson in history. और इसके बाद राइटिंग के बाद हिस्ट्री का एक लेसन था. उसके बाद the baby standard there bar B वो alphabet French alphabet सीख रहे. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both his hands, spelled the letters with his thumb. Poor Hauser, old Hauser, one of the villagers who had been sitting there, वो क्या कर रहा था, अपना प्राइमर छोटा हैंड बुक खोल के बच्चों के साथ वो भी ये अल्फाबेट पढ़ रहे. And you could see that he too was crying. आप देख सकते वो भी रो रहे, क्योंकि it was such a pathetic condition, sympathetic condition there, and he was crying. His voice trembled with emotion. उनका आवाज ट्रम्बलिंग हो रहे, कांप रहे.
with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Laugh and cry here means enjoy the situation. Oh, how well I remember it, that last lesson. Here, old Hauser रो रहे, लेकिन रोने के साथ बच्चों से बोल रहे थे, अरे कोई रोना मत. And how well I remember that last lesson. तो उसके बाद वो साल निकल गई, अभी भी फ्रेंड्स बोल रहे, मैं कितना अच्छा याद करता हूँ मेरा वो लास्ट क्लास. Then all at once the church clock struck 12. एकदम चर्च क्लॉक से घंटी बजने की आवाज आ गया. Then the angels bell for prayer. Prayer का बेल भी आ गया. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill. ड्रिल के बाद, एक्सरसाइज के बाद, मार्च परेड के बाद प्रशियन सोल्जर्स जाने की आवाज साउंडेड अंडर आवर विंडोज. हमारे खिड़की के बाहर जर्मन सोल्जर्स से पीछे के बाद जाने की आवाज आ गया. यम हैमल स्टूड अप. यम हैमल खड़ा हो गया. वेरी पेल, वेरी वीक इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैं टीचर को इतना बड़ा, हियर मीन्स टॉल मीन्स बिग, बिग विथ इमोशन. मैं टीचर को इतना बड़ा इमोशनली पहले कभी देखा नहीं. Because we had already described the nature, behavior of the teacher. He is a harsh, disciplined teacher. टीचर को इतना एक सिंपैथेटिक इमेज में मैं पहले कभी देखा नहीं. My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on, continue नहीं हो पा रहे. My friends. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and carrying on with all his might, power, पूरा शक्ति ले लिया. Now, यम हैमर को देखो, he lost his power. He became very weak. Even though he took a piece of chalk piece and wrote as large as he could. ब्लैकबोर्ड में बड़ा अक्षर में लिखा, वाइवा ला फ्रांस. फ्रांस की जय हो, लॉन्ग लिव फ्रांस. Then he stopped and leaned his head against the wall. उसके बाद he stopped writing and leaned his head on the wall, and he, without a word, he made a gesture to us with his hand. हाथ से एक्शन का इशारा कर रहे. School is dismissed. You may go. वो इशारे की मतलब, वो gesture का मतलब यही था. School is dismissed, not suspended. And you know the difference between suspension and dismissal. Suspension कुछ टाइम के लिए बंद करना, लेकिन dismissal means forever. अब यम हैमल ये बोल रहे, मेरी तरफ से स्कूल डिसमिस्ड है. कल से कोई नहीं आना जर्मन भाषा सीखने के लिए. स्कूल तो चलेगा, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, लेकिन भाइयों ये जर्मन भाषा सीखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आना है. मेरे तरफ से स्कूल डिसमिस्ड है. So in this lesson, Yam Hamel described the importance of language. How when the people are enslaved, when the people become slaves, they can open the lock of slavery by using the key of language. So many examples are there in the history. India had been under the control of British people for near about 200 years. So many national leaders have traveled far and wide to spread the message of nationalism, but they failed in their attempts. Because आप जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग भाषाएं, and they could not convey the message to the people. That is why the British could control over a long period of time. अगर उसी टाइम में भारत में एक ही भाषा होता, सिचुएशन बदल जाता पहले से ही. So after the writing, they had a lesson
इन ग्रामर के बाद राइटिंग का क्लास था। उसी दिन एम हैमल सभी बच्चों को नए नए कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिटन इन राउंड लेटर्स फ्रांस अल्सेस and they resembled to the national flag of France. They looked, hundreds of little flags are moving in the classroom. Finally, सभी people who were there, वो भी इनके साथ बैठ के पढ़ रहे थे। Finally, M. Hamel got up. He lost his power. He did not know what to say. ये harsh discipline teacher रो रहे थे। He took a piece of chalk piece. Blackboard पे बड़ा अक्षर में लिखा, "Vive la France. Long live France." Thank you very much.